Let us now look at the asset side of the balance sheet. Please remember the total of the liabilities and total of assets in any balance sheet anywhere in the world will always be the same, and there is no magic. So please remember, we accounts and finance people are not magician. We do not do any magic that the total of the assets and the total of liabilities always become same. There is no magic. There is no magic. It has to happen that way. And why it has to happen that way? Very simple. Can you spend more money than what you have? And the answer is no. You can only spend as much money as you have. So if I am investing 100 crore into a company by way of debt and by way of equity, what is the maximum worth of the assets that I can purchase is 100 crore. So that is why please remember the total of assets and the liabilities of any company anywhere in the world will always be the same. Now, what are the types of assets? So there are two types of assets as you can see on your screen. One is current assets and second is non-current assets. Second is non-current assets. Now let us first understand what is a current asset. So current assets, please pay attention. Current assets are those assets of a business which are to get converted into cash, and those are your current assets. Current assets are those assets which are expected to get converted into cash are the current assets. So the raw material. So when we in Tata Motors, when we purchase raw material, or any company in the world for that matter, ArcelorMittal, when they would purchase iron ore. Now why are they purchasing iron ore? They are not purchasing iron ore because they want to store it. They are purchasing iron ore because as quickly as possible they would like to process that iron ore, make steel, sell it in the market and get money from the customer. So the current assets are those assets which are expected to get converted into cash within a period of 1 year, and that is your current assets. So your inventory, your receivable are all your current assets. Cash and bank balance, in any case already it is cash, so it is also current assets. So that is the definition of current assets. Those assets of a business which are expected to get converted into cash within a period of 1 year are your current assets. Now what is a non-current assets? Now the definition of non-current assets, of course friends, is very simple. So what is a non-current asset? Non-current asset is an asset which is not a current asset, and that is a non-current asset. And why is that so? Because there are no two definitions. There are only two types. Either is a current asset or a non-current asset. So non-current assets are those assets which are not current assets. Meaning what? Meaning these are the assets which are not expected to get converted into cash. Rather, please pay attention, non-current assets will not get converted into cash. Rather, they are used to convert the current assets into cash. So for example, land is a non-current asset. Building on that land is a non-current asset. Plant and machinery is a non-current asset. Design, patent, know-how, technical know-how, logo, brand name are all example of non-current asset. So I'm repeating it once again. Current assets are those assets which are expected to get converted into cash within a period of 1 year. Those are current assets. Non-current assets are those assets which are not current assets, or non-current assets are the assets which are used for converting the current assets into cash. So जो raw iron ore है, iron ore is used by using land, building, furnace, plant and machinery to convert that iron ore into steel, and then steel is sold in the market, and when it is sold in the market you get cash. So that is the difference between the non-current assets and the current assets. I am sure you will never forget for whole of your life as to what is a current asset and what is a non-current asset. Now let us look at the examples of non-current assets first, and then we will come to the current assets.
So here you can see under the non-current assets, you see something which is known as tangible assets. And yesterday we discussed, and then you also see something which is intangible assets. We discussed yesterday as to what is a tangible asset and what is an intangible asset. And let me just quickly tell you, tangible asset is one that you can touch, you can feel, and you can see. That is a tangible asset. So building, land, property, plant and equipment, computer, furniture, aircraft, ship, train, yacht. Now these are all examples, tools, jigs and fixtures. Now these are all examples of tangible assets. Intangible assets, as I said, design, patent, software, know-how, customer relationship, brand, logo. These are all examples of intangible assets. Then you see an item in the you can see on your screen, which is as capital work in progress. I have a question, sir. Yes, please. Yes, please. Abhishek. Yes, Abhishek. Sir, for this tangible asset, machine is a tangible asset. Yes. Okay. So this year I purchased a machine Mm-hmm. of 1 crore rupees. Mm-hmm. So in today's in the current year Mhm. balance sheet, I will mention 1 crore as a tangible asset. Yes. Okay. Yes. And if we make balance sheet next year, Uh-huh. so what should I write in tangible asset? Again 1 crore or the amount will be different? Yes. So very good, Abhishek. So what you will do, you will write plant and machinery 1 crore minus depreciation 10 lakh, total 90 lakhs. So this is how you will write. So in the row of tangible asset, I will again write 1 crore, and there must be a row for depreciation also, right? Yes. So usko, if you see the if you look at the full accounts, अगर एक कंपनी का जैसे फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स का अगर आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट दिखाई देगा एक पेज पे, आपको P&L दिखाई देगा एक पेज पे, और उसके बाद में उसके शेड्यूल्स होते हैं. सो वो शेड्यूल में फिर वो पूरा डिटेल होता है. से फॉर एग्जांपल नाउ इन दिस शीट दैट यू हैव टेंजिबल एसेट्स, इट इज शोइंग 26.88. So 26.88 is the net amount, and please pay attention, what is the meaning of net amount? This is the net amount of depreciation. आपका जो एग्जाम्पल था उसमें आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी 1 करोड़ की, है ना, और ये साल में खरीदी तो उसमें 10 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया. तो अब जो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर जो फिगर दिखाएंगे, ये जो फिगर है उसमें आप 90 लाख दिखाएंगे, और इसका एक अलग से शेड्यूल बनेगा, उसको डेप्रिसिएशन का शेड्यूल कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का शेड्यूल कहते हैं. उसमें पूरा डिटेल होगा. परचेज प्राइस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़, लेस डेप्रिसिएशन 10 lakh, written down value 90 lakhs. So what you see here in the balance sheet that you have on your screen, you see the written down value. और written down value का क्या मतलब है? Written down value का मतलब है depreciated value. I hope that. So another example is that suppose this year company bought a patch of land, Uh-huh. and that is again cost of 1 crore rupees. Right. So and next year the value of that land increased by the 20 lakh, so that become 1 crore 20 lakh rupees. So Yes. what should be the tangible asset cost? वेरी गुड अभिषेक, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है. नाउ प्लीज रिमेंबर, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. ऑल एसेट्स ऑफ एवरी काइंड आर डेप्रिशिएटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट लैंड. Land is never depreciated in financial accounting. And why the land is not depreciated in financial accounting? Because all of us know it very well that the value of the land is never decreasing. Value of land is always increasing. By experience we know, because the mass of the land is limited. Population is increasing. So supply is same, demand is increasing, and therefore by experience we know that the value of the land is increasing in any part of the world. दुनिया में कहीं भी जाओ, लैंड की कीमत कहीं पे नहीं कम होती है, सब जगह लैंड की कीमत बढ़ती है. अफ्रीका में जाओ, एशिया में जाओ, रशिया में जाओ, न्यूजीलैंड में जाओ, और अर्जेंटीना में जाओ, कहीं भी जाओ. So as a practice, as an accounting standard, Abhishek, land is never depreciated.
So land is never depreciated. But now अभी एक नया जो accounting system आया है, which the companies have to pursue, and that is known as fair value based accounting. और फेयर वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग का क्या मतलब है? फेयर वैल्यू बेस्ड अकाउंटिंग का ये मतलब है कि पहले जो सिस्टम था अकाउंटिंग का, विच वाज हिस्टोरिकल अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल अकाउंटिंग में अभिषेक ऐसा होता था कि आपने लैंड 1 करोड़ की खरीदी तो आप उसको सालों साल तक 1 करोड़ पे ही दिखाओगे, इवन दो इस मार्केट वैल्यू हैज बिकम 50 करोड़. सो दैट वाज द अकाउंटिंग सिस्टम अर्लियर. नाउ द अकाउंटिंग सिस्टम इज चेंजिंग, and now the accounting system is you have to show it at fair value. So today, and of course this accounting system is not applicable to all companies. Today this accounting system is applicable in this country to only those companies whose net worth is more than 250 crores. तो जिन कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है हिंदुस्तान में, वो सारी कंपनियों को हर साल लैंड की फेयर वैल्यू मालूम करनी होती है, और जो भी फेयर वैल्यू होती है at that value they have to show the land in the books. They cannot show it now. These companies cannot show it at 1 crore. These companies will have to show the value of the land at the current price. What is the fair value today? So that is the answer to your question. Okay, right, sir. Yeah. Okay. So okay. Now then what you have is you have a capital work in progress. Now what is capital work in progress, friends? Very simple. So Tata Motors or yes please. सर अगर लैंड लीज पे मिलती है, हाँ, उसका प्राइस बहुत कम रहता है, तो ये कैसे शो किया जाता है इससे जो लैंड मिलती है? Okay. Now that's a very good question. That's really a very good question. Now see what we have to do. Obviously today we have a accounting system which is Ind AS, Indian Accounting Standards, and as per the Ind AS we have to show the assets in our books at the fair value. तो अगर आपने कोई एसेट लीज पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लीज पे लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी वो लैंड के ऊपर ओनरशिप नहीं है. यू ओनली हैव राइट टू यूज दैट एसेट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. After that period is over, you will have to surrender that land to the lessor. So आपकी ownership नहीं है. But you have a very valid point. If the land which you have taken on lease, and let's say you have taken this land for 100 years. It is on lease. 100 साल के बाद में ये लैंड आपको सरेंडर करनी पड़ेगी. अब आपका सवाल ये है कि ये जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, क्या वो एग्जाम्पल आपके वाले एग्जाम्पल में एप्लीकेबल होगा? उसको हम जरा एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करेंगे तो हमको क्या मालूम पड़ता है कि ये आपने लैंड 100 साल के लिए ली है और 10 साल इसके निकल चुके हैं. अब ये जो लैंड है इसको आप आपकी बुक्स में एसेट करके दिखा सकते हो क्या? नाउ रियली स्पीकिंग आंसर इज नो. एंड व्हाई द आंसर इज नो? बिकॉज यू आर नॉट द ओनर. So you are only paying the lease rent. So you can only show the lease rent as an expense, and the matter is over. I hope that answers your query. Yes. Okay. अच्छा, अब इसमें भी एक चीज और भी है. अब देखो इसको एक्सपेंड करता हूं कि when you have taken a land on lease, your arrangements can be of two type. One arrangement can be that at the time of taking the asset on lease, you have paid a lump sum amount. And you are not going to pay lease rent over next 100 years. So आपने जो भी पेमेंट करना था वो आपने शुरू में कर दिया. अब अगले 100 साल तक आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. So in that case, this amount that you have paid will come in your books as an asset, because अब आपको क्या करना है, हर साल ये जो एसेट है, जो लीज का अमाउंट है, हर साल आपको माइनस करते जाना है. और चूंकि ओनरशिप आपकी इसमें नहीं है, एंड दैट इज वाई you will keep on reducing the remaining value of, say for example 100 करोड़ आपने पे किया है ना, और 100 करोड़ के लिए 100 साल का आपका लीज का पीरियड है, तो आप हर साल जो वैल्यू है उसकी लीज की 1 करोड़ से कम करते जाइए और वो होते जाएगा. अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर
आपको ये मालूम पड़े कि इस तरह की लैंड इस एरिया में आज अगर दोबारा से लीज पे लेने के लिए जाएं तो वो लीज आपको 100 करोड़ में नहीं मिलेगी, वो लीज आपको 150 करोड़ में मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो लीज लिया है 100 साल का, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? उसकी फेयर वैल्यू 150 करोड़ है। तो ये एडजस्टमेंट आप करके आपकी बुक्स में दिखा सकते हो। सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन इन केस इफ द लैंड इज टेकन ऑन लीज बेसिस। I hope that answers your query. Yes, sir. Okay, very good, very good. So capital work in progress. What is capital work in progress? So टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है और दुनिया भर की सारी कंपनियां हैं, वो दे कीप ऑन स्पेंडिंग कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सब लोग कर, छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, मीडियम साइज कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो, ऑल कंपनीज continuously keep on incurring capex. So let's say for example Tata Motors is implementing a project worth where the project cost is going to be 10,000 crore and ये प्रोजेक्ट अभी 3 साल में खत्म होगा, 2 साल उसको प्रोजेक्ट को हो गए हैं और 2 साल में 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सो ये जो 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सपेंशन पे किया है, ये 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में विल बी शोन एज ए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। एंड व्हाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? क्योंकि ये प्लांट अभी तैयार हुआ नहीं है, ये प्लांट अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, ये प्लांट में अभी मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई नहीं है। सो जब तक ये प्लांट कंप्लीट नहीं होगा और मैन्युफैक्चरिंग चालू नहीं करेगा, तब तक जो भी खर्चे ये प्लांट के ऊपर होंगे, all those expenditure will appear in the balance sheet of Tata Motors as capital work in progress. So that is capital work in progress. The day the project is complete, the day plant is complete, the day the plant starts producing car and rolling out the cars and selling it in the market, उस दिन ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का जो अमाउंट है टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में, वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से निकल जाएगा और उसकी जगह पे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये अलग अलग जो कंपोनेंट है उसमें वो बाइफरकेट हो जाएगा और फिर वो बाइफरकेट होके वो टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट में वहां पर दिखाई देगा। सो दैट इज योर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। देन यू हैव अ नेक्स्ट आइटम दैट यू सी ऑन योर स्क्रीन, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सो टाटा मोटर है, कंटिन्यूसली दे हैव एन R&D डिपार्टमेंट, कंटिन्यूसली दे आर वर्किंग ऑन न्यू डिजाइंस, न्यू मॉडल्स। So whatever expenditures are incurred on new design, new models, new technology, so all that until and unless that technology is complete, whatever expenditure are incurred by Tata Motors, so that will be coming in the line as intangible assets under development. So दोनों में क्या फर्क है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में क्या फर्क है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज फॉर द टेंजिबल एसेट्स एंड ये जो लाइन है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट इज फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नाउ व्हाट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? टाटा मोटर्स they keep on making investment in different companies and where the objective of the investment is not to purchase shares and sell it in the market. Objective is to have a strategic investment. So एक कोई अच्छा बड़ा सप्लायर है या कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी है and Tata Motors, I'm giving you an example of Tata Motors, but this is applicable to every company. So just to ensure that this company do follow the norms of the principal investing company, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनकी बोर्ड की पोजीशन मिलती है, तो उनकी जो पॉलिसीज है, फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं, ऑपरेटिंग पॉलिसीज हैं, तो ये कंपनी उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। सो दैट इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है किसी कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे हैं, और क्यों खरीदे हैं? इसलिए नहीं खरीदे क्योंकि वो आप उसको बेचोगे कल को मार्केट में जब प्राइस ऊपर हो जाएगी, आपने इसलिए खरीदे ताकि आप उस कंपनी के ऊपर थोड़ा अपना कंट्रोल रख सको। सो दैट इज योर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर्ड टैक्स एसेट्स में आपसे बाद में चर्चा करूंगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सो व्हाट इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस? आई एम श्योर सम ऑफ यू मे थिंक लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स में क्यों आ रहे हैं?
loans and advances are coming in the assets because these loans and advances are not the ones which company has taken. These are the loans and advances which the company has given. So as we were discussing in our early discussion, कि sometimes Tata Motors will give advances to the suppliers so as to facilitate investment at their end, so that they are able to continuously make supplies to Tata Motors or any other company for that matter. So those loans and advances, those payments will come in the balance sheet as part of the non-current assets under the heading loans and advances. Other non-current assets. So anything which is not falling in the earlier items will come as other non-current assets. So other non-current assets क्या हो सकता है? एक प्रॉपर्टी है ना? So प्रॉपर्टी है. Now it is not land, it is not building, it is a property. So वो प्रॉपर्टी है. So let's say कोई गेस्ट हाउस है. So the guest house will be part of your other non-current assets. Guest house is not the office building. Guest house is not the factory building. Guest house is a property, so it will be part of your other non-current assets. So these are your non-current assets. Let us now look at the current assets. Current assets, first line item is current investment. Now what is current investment? Remember, all companies on this earth, the ones which are managed professionally, so they have a very effective treasury department. और ट्रेजरी डिपार्टमेंट क्या करता है कि कई बार कंपनी के पास में सरप्लस पैसा है, 500 करोड़ अवेलेबल है, 100 करोड़ अवेलेबल है, 50 करोड़ अवेलेबल है. नाउ कंपनी इज नॉट गोइंग टू, इवन इफ दिस मनी इज अवेलेबल फॉर 2 weeks, 3 weeks, 1 day, 4 day, 5 day, 3 months, 4 months. So even if this money is available for short period, company is not going to keep that money in the bank account and earn nothing on it. So what the company will do, what the treasury management department of the company will do, they will invest this money into short-term avenues. So on the date of the balance sheet, that is 31st March 21, जो भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट होंगे जो कंपनी ने किए होंगे, that will come in the balance sheet as current investment. और ये करंट इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टेम्परेरी है कि जैसे ही ये शेयर का भाव बढ़े, बेच के निकल जाओ, प्रॉफिट कमा लो. इन्वेंट्रीज आप सभी को मालूम है, ट्रेड रिसीवेबल्स आप सभी को मालूम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश आप सभी को मालूम है. कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि आपका जो पैसा, जैसे आपने वो लिक्विड फंड में डाला हुआ है, और लिक्विड फंड में कैसे है कि आपको खाली बैंक को बोलना है कि ये लिक्विड फंड को डिस्पोज करके ये पैसा मेरे अकाउंट में डाल दो. सो ऑल सच इन्वेस्टमेंट्स विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश विदाउट एनी लॉस are cash equivalent. And then short term loans and advances, employees go on travel, so they take advance. Sometimes employees take some advance, so that is also advance. Sometimes you submit a quotation or tender, so when you are submitting a tender, together with the tender you have to give some advance. So all those payments that the company makes are short term loans and advances. Other current assets, so anything which is not falling in whatever you see on the top, that will be part of your other current assets. So friends, this is all about the balance sheet. So what we have done, we have understood balance sheet part by part. First we understood what is the liabilities side of the balance sheet. It has got 3 components: equity and liabilities, number 1, number 2 non-current liabilities, and number 3 current liabilities. Then we understood the asset side of the balance sheet. It again has got 2 components. Component number 1 non-current assets, and component number 2 current assets. So with this we come to the close on the discussion of the balance sheet per se. If you have any question, any query, you can please ask me, and then I will be happy to take your questions as your query.